बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो है वो टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, ठीक है ना। तो आज की हम वीडियो में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखें जी, ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के जो ग्लोबल एस्पेक्ट है उनमें देखें, टुडे कम्युनिकेशन इज़ नॉट कन्फर्म टू द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल विद इन द country, rather it goes across borders, ठीक है। A communicator has to communicate his or her message with the people who share the same culture and society, as well as has to communicate with the people who share different cultures and societies, even different languages. The purpose of communication is to use words, forms and patterns that helps the reader to grasp the content. In intercultural communication, a variety of audience, the very basic strategy is written used to in cross culture communication and is known as localization. According to the Walter Beckway, localization involves translating content and adapting it to local culture, changing not only content but also graphics, colors, times, date, format, unit, and measurement currency and samples. According to Hooft, there are two levels of localization, ठीक है ना। तो लोकलाइजेशन मतलब कि क्रॉस कल्चर जो होती है कम्युनिकेशन, इसमें जो है वो लोकलाइजेशन होती है, ठीक है। लोकलाइजेशन की जो है ना वो दो फॉर्म है, एक रेडिकल और दूसरी, ठीक है ना, रेडिकल लोकलाइजेशन, ठीक है। Radical localization is more in depth, incorporating cultural differences that affect the way users think, feel, and act. As an example, Nancy Hoft explains that an American document localization for a British audience need to be adapting. So उसके बाद ये देखें नीचे, following rules are involved. रूल ऑफ एटिक्वेट्स, ठीक है। दी अप्रोच टूवर्ड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद देखें द रेट इंटेंसिटी ऑफ स्पीच, उसके बाद द रोल ऑफ सिंबल्स, लोकल सिंबल ऑफ इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड सोसाइटी एंड द वे पीपल गो अबव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। उसके बाद इन द यूनाइटेड स्टेट पीपल ऑफ्टन कंडक्ट बिजनेस इंक्लूडिंग वेरी लार्ज सेल्स विद पीपल whom they hardly know, but in many countries people prefer to achieve some kind of personal relationships before entering into any significant business arrangement with them. To communicate effectively, one must spend some time considering these differences and make changes in documents accordingly. उसके बाद आ जाते हैं थिंकिंग पैटर्न्स, ठीक है ना। मच ऑफ यूएस थॉट फोकस ऑन द कॉज effect patterns and problem solving, identifying the cause of perceived effects and suggesting methods to alter the causes. In other cultures, however, a more common thought pattern is web thinking. In Chinese tradition, for instance, everyone exists not alone but in a relationship to many other things, so that every item is seen as part of an even larger, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें आगे मज़ीद जो है वो बताया हुआ है, लाइक रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। द इंडिविजुअल इज ऑफ्टन perceived different in a group dominated by the web thinking, and web and group ideas can greatly affect the tone and form of communication. उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेजेस। इन द यूनाइटेड स्टेट द डायरेक्ट मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, state the main point right away and then support it with facts. In some other cultures, that approach is unusual, even shocking. Although in the United States, a writer would
simply state in a memo that he or she needs a meeting। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल लोकलाइजेशन को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।